That's it. Sir, not audible.
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir, audible. You can clearly hear my voice, right? Yes, sir, clearly audible. Okay. Okay. I don't know. There was some problem with the computer. So anyway, we'll start. So you're able to see my screen? Yes, sir, screen is visible. All right. And my notepad also visible, right? Yes, sir. Okay. Thank you. All right. So today we'll mostly discuss about addition of angular momentum. Uh, so all of us are familiar with the Hamiltonian, which is kinetic energy plus potential energy over here, right? If we are solving uh, hydrogen atom, for example, in quantum 1, then also it is, as I explained it yesterday, that this del square Laplacian operator is basically expressed in spherical polar coordinates, and then your Vr is nothing but minus k by r, and then you do the variable separation method and solve the partial derivative differential equations to get the solution. So, if we consider the hydrogen atom problem with spin orbit interaction, if we consider because the hydrogen atom problem in quantum 1 might not have considered the spin orbit coupling. So if the spin orbit coupling is there, then you will have a L dot S term, L dot S by RQ. So that is basically an extra energy. If we try to understand that the angular momentum, orbital angular momentum and the spin angular momentum of the electron will interact. And if we include that interaction energy, so that this is also called as coupling, spin orbit coupling, then we'll have an extra term which is H0 plus H int. Now, LZ and SZ commute with H0, which is the original Hamiltonian without any interaction energy. And so does JZ. So what is LZ? LZ is the Z component of orbital angular momentum. SZ is the Z component of the spin angular momentum. And JZ is the Z component of the total angular momentum. So J is nothing but, it has been written somewhere here. J is nothing but L plus S. J, total angular momentum is L plus S. So most of the time we will be referring unit 13 of quantum 1, MPH-004. So you have to kind of be very familiar with 004, which is quantum 1 for unit 13.
Now, let us check if Lz commute with this interaction Hamiltonian. So Lz commutation with L dot S R Q. So L dot S means it will be Lx Sx plus Ly Sy plus Lz Sz. So if I take the commutation relation, so Lz with the x component of L dot S, with the y component of L dot S, and with the z component of L dot S. Okay. So what will happen? You can look at it here using basically your algebra of commutator bracket. So what exactly you will get? Lz Lx Sx, because L and S commute with each other, right? So that's why the commutator for L and X will be 0 anyway. So what exactly we are getting? Lz Lx commutator Sx, Lz Ly commutator with and Sy, and Lz Lz commutator bracket into Sz. Now Lz Lz will be 0, right? Because that's Lz square minus Lz square. So that will be 0 anyway. So we are left with alpha by RQ. And what about this Lz Lx commutator and Lz Ly? All of us have done that in quantum 1. Let me remind you again somewhere here. Has it been just to show you? No, just 1 second. Yeah. So this kind of relations have you done in quantum 1 already? Jx Jy is commutator is equal to IH cross Jz. Can somebody confirm? Angular momentum Lx Ly is commutator is equal to IH cross Lz. ऐसे बताया था नहीं बताया है? No. ये बताया गया है already? Let me No, write sir. down. No, sir. Let me write down. So if you have Lx Ly commutator will be equal to IH cross Lz. Similarly, Ly Lz into H cross Lx and Lz Lx equal to IH cross Ly. All of you familiar with this kind of relation? Similarly, also we can write similarly for spin Sx Sy will be equal to IH cross Sz, which is for spin quantum spin operator. Similarly, Sy Sz will be equal to IH plus Sx and Sz Sx equal to IH plus Sy.
And if we take the J component as well, the total angular momentum as well, so we'll also write similar Jx Jy will be equal to IH plus Jz, and Jy Jz equal to IH plus Jx, and Jz Jx will be equal to IH plus Jy. Okay. So with that, we come back to our calculation over here. So LZLX, what will be LZLX? We have one term LZLX commutator, LZLY, and LZLZ. LZLZ is 0 anyway. So LZLX will be equal to Ly, IH cross Ly. And LZLY, we have done LYLZ. LYLZ is equal to IH cross LX. So if I take LZLY, it will be minus IH cross LX. Clear? Yes. Yes, sir. Okay. So then what exactly we are getting? Ly Sx minus Lx Sy. Huh? So IH cross alpha by RQ. So if it is not 0, so LZ commutator with L dot S by RQ, alpha into L dot S by RQ, is not 0. So it does not commute with the interaction energy. Okay. So similarly, if we do take the commutator of SZ with L dot S, we do the similar calculation. So SZ with LXSX, SZ with LYSY, SZ with LZSZ, and since L and S commute with each other, because L is orbital and S is spin, so they will obviously commute. So in that case, what exactly we will be getting? SZSX, SZSY, and SZSZ. Again, SZSZ will be 0 because SZ square minus SZ square it will be. So we are left with SZSX. So what I have written already in the notebook earlier, we can see it here. So we have noted down SZSX is equal to IH cross SY. SZSX is equal to IH cross SY, and SYSZ is equal to IH cross SX. But what will happen if I take SZSY, it will be minus IH cross SX. So minus IH cross taken common, so it will be minus SX. So SYSX minus SX LY is equal to 0. So that means your commutator of LZ with interaction, H interaction, and SZ with H interaction is not 0. They do not commute. However, if we take, this is important, the commutator of JZ with the interaction energy, JZ with alpha L dot S by RQ. So what is JZ? JZ is nothing but LZ plus SZ. JZ is nothing but LZ plus SZ. Okay. So that means commutator of LZ with interaction plus commutator of SZ with interaction. So that means this part we already have calculated. LZ commutator with L dot S and SZ commutator with L dot S. So these basically these two terms, this one
Lz with L dot S and Sz with L dot S. And if we add them both, we'll basically get 0. So Jz actually commutes with the interaction energy. So the total angular momentum Jz commutes with the Hamiltonian, because all Lz, Sz and Jz, all of them commute with H0. But Lz and Sz do not commute with H interaction. But Jz commutes with H interaction. That's why Jz, the angular momentum Jz, commutes with the total Hamiltonian H, which is equal to H0 plus H interaction. So therefore, if we use our earlier, yesterday we have time evolution, right? So del Jz by del T will be equal to commutator of Jz with Hamiltonian. All of you remember that? Are you getting what I am telling? Let me write it down. ये हमने कल बोला था, del O by del T is equal to OH commutator. All of you remember this one? Yes, sir. Yeah, so अगर मैं इसी को लिख रहा हूँ, del Z by del T will be JZ Hamiltonian, right? That's fine. Yes, sir. We can write any operator. Yeah, so but from our calculations we saw that Jz commutes with Hamiltonian, right? So that's equal to 0. This implies Jz will be constant, right? Isn't it? Yes. Yes, sir. So it will be a constant of motion. Jz will be a constant of motion. So that's what it is telling you. So it will be a constant of motion, even though Lz and Sz are not. Lz and Sz are not constant of motion. They will be changing, but Jz will remain constant. But this part is very much important, that the Hamiltonian in this case has a rotational symmetry, and hence Jz commutes with the Hamiltonian. अगर Hamiltonian का rotational symmetry नहीं होता, remember what we talked about symmetry, rotation symmetry, translation symmetry in the first class. So here the Hamiltonian, which is having the term L dot S. So if we have a rotational symmetry, then also the Hamiltonian will not change. The Hamiltonian remains invariant under rotational symmetry. So that is why we are actually having Jz as a constant of motion. So what exactly we will be discussing, expected outcomes will be derive the commutation relation for the total angular momentum J for addition of two angular momentum J1 and J2. Determine the eigenvalues of J square and Jz. And most importantly, determine the matrices J square and Jz for a system of two spin-up angular momentum. And then we'll talk a little bit about the Class-4 coefficients, which are popularly known as CG coefficients. Okay, let us come to the fact of addition of two angular momentum. Okay. The commutation relation, reiterating or revisiting the commutation relations again, Ji square with Jix, if we have let's say two. So the commutation relation of individual operator, we have two particles, we
We have two particles, particle 1, particle 2. So for particle 1, j square will commute with jx, j square will commute with jy, and j square will commute with jz. So the commutator bracket will be equal to 0. Can anybody tell me if the commutator bracket is 0, what does it mean? Physically, what does it mean? If the commutator bracket is 0, what does it mean? Can someone explain? As I said, let's say the commutator of bracket of A and B is equal to 0. A is an observable, B is an observable. So in quantum mechanics, they are expressed in terms of operators. So if they are expressed in terms of operators, and then we take the operator commutator, A, B commutator bracket is equal to 0. Physically, what does it mean? Okay, let me reframe my question. Agar I'm writing X commutator PX, what is the value of this one? IH cross. What is the value of X PX commutator? Zero. Is it 0? Yes, sir. X PX 0 or IH cross? लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना? Anyone else? X Sir, PX IH cross. X PX का commutator bracket कितना होगा? IH cross, sir. IH cross, yeah. That's not 0. That's what I'm stressing. So, Sir, I think what you were asking previously, that means if the commutator is 0, then we can know the value of them accurately. Means they are well, not canonically. if the commutator bracket is 0, then we can detect both of the observables simultaneously. Yes, sir. Not accurately, I mean, well, simultaneously. Simultaneously to the accuracy. Yes. But if this is not equal to 0, that means we cannot detect them simultaneously. So this is nothing but your uncertainty principle, that if you determine X, then you cannot determine P that accurately, or simultaneously both of them cannot be determined. When I say determined, means it is accurately determined. Okay. So same thing here is J square and Jx, they can be determined simultaneously. But Jx and Jy, we take commutator, it will be IH cross Jz, and Jy, Jz will be IH cross Jx, and so on. So this means that if we know the X component of total angular momentum, we cannot absolutely say what is the Y component of total angular momentum. What we can say is one of the components of total angular momentum and the total angular momentum itself, that we can determine simultaneously.
But what about this one? Total angular x component of total angular momentum of first particle I is not equal to j. So x component of total angular momentum of first particle, y component of total angular momentum of second particle. Those two can be determined simultaneously. Those are two different particles, right? So they will commute. So jix, jjy will be 0. Similarly, jiy, jjz, jij, jjx is equal to 0. So what about the x components? Yes, x component will also be 0, right? Because so far there are two different particles. So you can see the first subscript is I, second subscript is j. So which is denoting the first one is for first particle, second one is for second particle. So since there are two different particles, so we can determine their total angular momentum simultaneously. And ji square will be commuting with jjx. Again, two different. We already know ji square will commute with jix, and it will also commute with jjx. jjy, jjz. So using these relations, you can possibly check like j square jx, j square jy, j square jz will be equal to 0. All right. यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? Yes, sir. Yes. Yeah. Next to define j square. J square क्या है? J क्या है? J basically j1 plus j2. So j square will be j1 plus j2 dot j1 plus j2. So it will be j1 square plus j2 square plus j2 j1 plus j1 j2. j2 j1 j1 j2 क्या है? j2 j1 पहले देखेंगे. j2 j1 क्या है? j2x j1x j2y j1y j2z j1z. That's fine. And this one is j1x j2x j1y j2y j1z j2z. Simple हम जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही लिखा है. But now equation 4.2b, 4.2b, this one, ये क्या है? j1x, अगर हम j1x और j2x ले रहे हैं, j1x j2x minus j2x j1x is equal to 0, right? From this commutator, what can we write? अगर j1x j2x j1x j2x commutator is equal to 0, this implies what? j1x j2x minus j2x j1x is equal to 0. This implies j1x j2x is equal to j2x j1x, right? Isn't it? Yes, sir. Yeah, if that is the case, then what is that? Yeah, here. So we can simply in the second term, so j1x j2x we can write or j2x j1x we can write j1x j2x, right? We can interchange their subscripts, right? So it will be twice of j1x j2x plus j1y j2y j1z j2z. Clear? तो j स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? j स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? j1 स्क्वायर होगा प्लस j2 स्क्वायर होगा प्लस
we need the x, y, and z components like that, right? Price of J1x, J2x, J1y, J2y, J1z, J2z. ठीक है? ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं SAQs, these are very important. So solutions are also given at the end. So I would suggest all of you to practice this commutator relations of total angular momentum, orbital angular momentum, and spin angular momentum. With one thing in mind, that as I said, if the commutator bracket is 0, that means we can determine both the observables simultaneously. If the commutator bracket is not 0, then we cannot determine both of the variables observables simultaneously. So what will be? I mean, we can have total angular momentum like half 1 0, half 1 and 1.5, like that, right? So depending on, we'll mostly be looking into two cases where J1 and J2 is equal to half. So that means we'll add two particles having total angular momentum half h cross, and second one will be basically h cross and half h cross. Once this discussion is done, then you can realize why exactly we are interested in half and 1.5. So this is also related to what kind of interactions among particles we are talking about. क्योंकि दो पार्टिकल अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, है ना? जैसे मैग्नेटिज्म में आप लोग ने पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट है किसी का, दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. सो हियर आल्सो the total angular momentum, they will interact, right? All right. So eigenstates of angular momentum. तो वेव वेक्टर है, स्टेट वेक्टर्स, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? So J1, MJ1 are the simultaneous eigenstates of J1 square and J1Z. हम पहले से बोल चुके हैं कि J square और JZ, they commute with each other. So simultaneously we can determine J square and JZ, or for that matter J square JX, J square JY. So here we have taken JZ component. So J square JZ. So MJ1 corresponds to J1Z and J1 corresponds to J1 square. So similarly, J2, MJ2 are the simultaneous eigenstates of J2 square and J2Z, second particle. This is for the first particle, this is for the second particle. तो अगर हम उसको again referring unit 13 of quantum 1. So J1 square, if I try to write the eigenvalue equation, so J1 square operating on J1 MJ1 will be giving J1 into J1 plus 1 H cross square. ये पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है? Is this part equation? No, sir, not taught. Unit 13 already covered or not covered yet? Not covered, sir. Okay, so for the moment, then you just have to remember ये कैसे आ रहा है वो वहां पे बताएंगे, ठीक है? And this kind of relations actually hold for orbital angular momentum and spin angular momentum as well, ठीक है? So let me write down then just for your. So अगर हम ऐसे J square operating on psi, I'm writing psi instead of the function, will be equal to J into
j plus 1 h cross square psi. ठीक है. So similarly, L square psi will be equal to L into L plus 1 h cross square and S square S into S plus 1 h cross square. Okay. So these are the eigenvalue equations that this angular momentum, orbital angular momentum, spin angular momentum and total angular momentum will follow. ठीक है. So J1 square for particle 1, J1 square operating on the state J1 MJ1 will give me J1 plus 1 h cross square into the state, and the Z component JZ. So what does it give? J1Z operating on J1 MJ1 will give me MJ1 into H cross. MJ1 into H cross. So the eigenvalue in case of J square is H cross square J plus 1. And the eigenvalue for Z component of Z, JZ is MJ H cross. So Z component into H cross. So similarly, for particle 2, it will be J2 square will give me J2 into J2 plus 1 H cross square, and J2Z will give the eigenvalue MJ2 H cross. Okay. So for each value of J1, there are two J1 plus 1 values of MJ1. MJ1 कितने हो सकते हैं? So starting from minus J1 to J1 through 0. Okay. अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम मिला है तो उसके m वैल्यू कितने होंगे? m जो z कंपोनेंट वैल्यूज, so that will vary from minus J1 to J1 through 0. Excuse me, sir. Sir, please tell us why this value m varies from minus J1 to plus J1. Just a second. Yes, tell me. Sir, please tell me why this value of mj varies from minus J1 to plus J1. It's a space quantization. That's what I asked. Actually, if you go to unit 13, MPH-004, which is quantum 1, so you'll see that when you go from sir, does it come from spherical harmonics? Does it come from there? Sorry? Sir, does it come from spherical harmonics? In maths, I was reading about spherical harmonics. Does this come from there? Yes. Achha. Spherical harmonic means, see what exactly happens when you are operating your angular momentum operator. Okay. Yes, sir. That time what you expect is it can so angular momentum is coming from revolution of the particle around the nucleus, right? Or about its axis. Yes, axis, exactly. Yes, so sir. it will not have continuous rotation for all azimuth angles. So the azimuth angles will be quantized. Okay. Okay, sir. So if you take in spherical polar coordinate system, your r, theta and phi, right? Yes, r, sir. theta and phi. So this theta, which is the angle it makes with z axis, so that will not have continuous values. It will be quantized. For certain values only, it will give you the eigenvalues. Okay, sir. So that kind of quantizes the space. So that is also called space quantization. That means the angular momentum cannot take
all possible values. Okay, sir. So yeah, so yeah, that is also it has been so hydrogen atom अभी बताया नहीं है ना, वो problem हो रहा है थोड़ा. But sir, we are enjoying your class, sir. We are Yeah. enjoying your class. Thank you so much, sir. your हाइड्रोजन एटम में जैसे +2 में पढ़ाया गया होगा पहले, उसमें बताया होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल लेता है ना, ये Yes, sir. बताया. Yes, sir. या But वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली दैट इज कमिंग व्हेन यू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन. You will see that for all theta values, r theta phi, right? So for all theta values, you will not get your angular momentum. Yeah. अच्छा. So that is why it is coming. तो उसे हम सोच सकते हैं कि अपर हाफ में वो J1 तक जाएगा, लोअर हाफ में मतलब फ्रॉम थीटा अगर हम 0 to 90 लेंगे एंड डाउन साइड में भी वैसे ही लेंगे, तो वो क्या होगा, अपर हाफ में 0 to J1 एंड लोअर हाफ में, और 0 भी उसमें रहेगा. सो इसीलिए वो -J1 to J1 through 0 होता है. Yes, sir. Yes, sir. जेट कंपोनेंट्स. मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा ये जो यूनिट 13 है इसको रेफर करें, ठीक है ना. आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड स्पेस क्वांटाइजेशन, और गूगल भी कर सकते हैं. स्पेस क्वांटाइजेशन है, सो उसमें वो बता देगा कि क्या हो रहा है. बेसिक चीज ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं ले सकता है, या थीटा जो वैल्यू है वो थीटा विल नॉट बी कंटिन्यूअस, it will take only certain values. And sir, what does phi stand for? Phi, like theta here stands for mj. What does phi stand for? Well, हम जेड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, राइट? अगर let me draw a little bit so then I can explain maybe. Yeah, just a second. I is related to spherical coordinate, na sir? Yes. So let me draw it. So you have your, let's say, 3 axes. My screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, very clear. Yeah. So let's say this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and I have my point over here, point P, let's say, okay. Yes, sir. Which has the coordinate x, y, and z, or I can also write r, theta, and phi, right? Yes, sir. So if I take a projection of this one on the xy plane, Yes, sir. and I say that point is P prime, and I join P prime with origin, let's say here. So this is, so this part is r, of course this is r vector. Yes, sir. So this part is r, which is the radial part. Yes, sir. Then if I take the projection, so that will be what? And this angle it makes with z is theta. So that's why the z component is r cos theta, right? Yes, sir. And so what will be this projection? That this projection would be r sin theta, right? Okay, sir. Yes, sir. Yeah. And this angle, the angle it makes with x-axis is phi. Yes, sir. So your x component will be R sin theta, R cos phi. r sin theta cos And phi. cos phi. And y component would be r sin theta Sin phi. Yes, and sir. z component is equal to R cos phi. r cos Theta, sir. Yes, sir. Yeah. So, yes, sir. Yes, sir. So when I said, so what you assume is that this theta should take all continuous values, right? Yes, sir. Theta should take values from 0 to 180. Yes, sir. Go from positive z-axis to negative z-axis. Yes, sir. But what happens when you solve Schrodinger equation for hydrogen atom? Once you solve Schrodinger equation for hydrogen atom, yes, sir. Your theta will not be having continuous values. It will take only certain values. So what will happen? Let me,
My drawings are not that good, but let me try. No, sir, perfectly fine, sir. For perfectly fine. So instead of taking values, it will take this value, and Yes, then sir. next one would be somewhat like this. Yes, sir. So Yes, sir. Middle one is 0. yeah, middle one is 0. So for Yes, this sir. one we'll get, for next one, let's say here we'll get another value. Yes, sir. So similarly for this one, we'll get one value. Yes, sir. For another one, we'll get another value. So this way we'll have 0, then next one, then next one. Yes, So sir. all values are not possible Yes, sir. from the equation condition. You will see. So what will happen? It will go. So you can see in upper half and lower half are symmetry. 1 and 2 So minus 1, 2. yeah, Minus 1, so it will go from, let's say, J1 to 0 to minus J1 yes, sir. or JZ, whatever you call it, JZ maybe. JZ, Z component. Huh? Yes, sir. So Yes, sir. it goes from minus JZ to plus JZ through 0. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very clear, sir. Thank you, sir. So that's why we're taking over here that it takes 2J. So J minus J1 to J1, that means it is 2J1 plus 0 it will be. So 2J1 plus J1. So similarly for J2, it will be 2J2 plus 1. Okay. So MJ2 will take those many values. All right. Yes, sir. What about the eigenket? Eigenket कैसे रहेगा? So here the eigen, let me highlight it. Since the operators J1, J1 square, J2 square, and J1Z, J2Z commute with each other, we can define a product vector of the kind, this one, called direct product vectors of J1 M1 and J2 M2, which is and simultaneous eigenkate of these operators. ये ऑलरेडी वैसे बताया है कि इक्वेशन 4.2 of appendix 4a में है. So this is called outer product. How many of you actually know what is outer product? Tensor analysis बताया गया है नहीं? Sir, I've heard the name. I don't remember. Yeah, outer Outer product. and inner product. Yeah, inner product is like dot product, it's simple matrix multiplication, right? Yes, That's sir. fine. जैसे आप लोग करते हो, क्या है वो? Let me write it. Screen. जैसे psi dot psi करते हो ना, so ये इनर प्रोडक्ट है. अगर साई वेक्टर जो है, लेट मी राइट डाउन, अगर ये ऐसा है कि A1, A2, A3, A4 अप टू लेट्स से AN है कॉलम मैट्रिक्स, तो साई ब्रा जो होगा वो क्या होगा? इट विल बी A1, A2, A3, yes, sir, up to AN, the row matrix, right? Transpose हो जाता है, sir. Yes. So then what happens once you take psi mod, so psi inner product, so that will be A1, A2 up to AN, and then so it's like a 1 cross n matrix, 1 cross n matrix, Yes, and sir. then you take A1, A2, I guess is visible, AN. So this is a n plus 1. Yes, sir. So this will give you basically a single value, which yes, is sir. 1 cross A1, 1. A2, A1, A1, A2, A2. Yeah. So A1 square plus A2 square plus A3 square, like that only, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So it's simple. This is inner product. Yes, sir. Anybody having an idea about what is outer product? Because Yes. we'll be talking about that. Yes, sir. Please help us recollect, sir. Please help us recollect. Yeah. So if let's say I'm just writing a very simple 2 by 2 matrix. My A matrix is equal to A11, A12,
2 1 A 2 2. Okay, I can write n Yes, by sir. n matrix. That's fine. I'm Okay. just taking a 2 by 2 matrix, Okay, sir. and my B matrix is equal to B11, B12, B21, B22. Okay. So if I'm writing A outer product B, what does it mean? So this means it will be a matrix of this form: A11 B, A12 B, A21 B, A22 B. Okay. So that will be like a matrix inside a matrix. So that will be like A11, then it will be B11, B12, B21, B22. And here it will be A12, again B11, B12, B12, B21, B21, B22. B22. Hmm. And yeah, so on and so forth. Yes, sir. Yeah. मेरा सजेशन ये है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर if you want to understand quantum mechanics well, so then try to understand differential equation, how to solve differential equations, and bit of matrix algebra. Yes, sir. Legendre and Bessel. Yeah, so matrix algebra अगर आ रहा है तो then ये all bracket notations और commutators वो सब easily हो जाएगा. Sir, differential equation कौन सा equation? Legendre, Bessel? No, basically see how to solve any differential equation if it is exact or partial. अच्छा. ठीक है ना. So क्योंकि जैसे आप लोग since it is a correspondence mode, so you can read on your own, right? It will Yes, not sir. be taught in the class. So for that matter, I'm telling in mathematical physics, if you look at it, so पहले तो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. तो हाँ, सेकंड sir. ऑर्डर में आप लोगों को लेजेंडर, फॉर्माइट, Yes, sir. बेसल, ये सब पढ़ाया गया होगा, है जी ना. सर, जी सर, जी सर. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे लाप्लास इक्वेशन हो गया या हाँ सर, हाँ सिमिलर सर. काइंड. Separation of variables. Yeah, so Separation. it will be better if you try to understand how exactly a given differential equation can be solved. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Physics is half of the problem is basically solving differential equations. एंड क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है वो जो चैप्टर होगा उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, है ना. Yes, sir. तो उससे क्या होगा, ये सब चीजें ये कुछ भी नहीं है. आई मीन क्वांटम मैकेनिक्स में आधी चीजें तो बेसिकली मैथमेटिक्स है. जी सर. तो वो मैथमेटिक्स अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना. जैसे यहाँ पे मैंने बोला आउटर प्रोडक्ट, ये अब समझ में आ रहा है, राइट. अगर sir. n बाई n लेंगे तो वो कितना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना. Yes, तो sir. यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि ऑपरेटर्स J1 J1 square, J2 square, J1Z, J2Z commute with each other. So we can define a product vector of the kind. कैसा होगा कि स्टेट वेक्टर फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेट वेक्टर है J1 MJ1 का, उसका आउटर प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, J2 MJ2 के साथ. ठीक है. So all information, all total angular momentum and Z component of total angular momentum of particle 1 and total angular momentum of particle 2 and Z component total angular momentum of particle 2, all information is stored in this state. Okay. क्योंकि आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स होंगे उसमें. कोई ऐसे प्रोडक्ट होके, क्योंकि जैसे इनर प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट करके हम उसको ऐड कर रहे थे तो वो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता था, है ना. बट आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं उसमें. ठीक है. ओके सर. या, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्टेट फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम. ऑलराइट. तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में कि J1 MJ1 आउटर प्रोडक्ट विथ J2 MJ2 इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया, है ना. यस सर.
ओके और वो डायमेंशनलिटी भी बोला है, द डायमेंशनलिटी ऑफ H1 and H2 will be 2J1 plus 1 and 2J2 plus 1 क्योंकि आप अगर उसमें देखेंगे तो वो 2/2 जो मैट्रिक्स था डायमेंशन वाइज, तो वो कितना बड़ा मैट्रिक्स बन गया है अभी, है ना, क्योंकि वो 4/4 मैट्रिक्स बन जाएगा ना। Yes, sir. तो सिमिलरली क्योंकि लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, तो ये 2/2 मैट्रिक्स था बट अभी इसमें दो आ गया है, सो 1 2 3 4, तो इधर सो 1 2 3 4, सो 4/4 मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना, क्लियर। So in with that knowledge in mind, we can simply write. So अभी ये बात है कि J1 MJ1 outer product with J2 MJ2, this will be the state vector, simultaneous state vector or the state vector for J1 square, J2 square, J1Z and J2Z. तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? So J1 स्क्वायर का होगा H क्रॉस स्क्वायर J1 into J1 plus 1, J2 स्क्वायर का H क्रॉस स्क्वायर J2 into J2 plus 1. So similarly J1Z का MJ1 H क्रॉस and J2Z का MJ2 H क्रॉस, ठीक है। ये जो चार इक्वेशंस हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, Yes, sir. okay, so at this point I'll take a couple of minutes break. You can look into the PDF and then we can discuss about. Okay, sir. Sir, please let this be on the screen. Yeah, it is on the screen. Yeah. Okay, sir. Okay.
Sir, your voice is not audible now. Okay. Should we start? Yes. Yeah. All right. So as I said, these 2J1 plus 1 into 2J1, 2J2 plus 1 direct product kits of the kind J1 MJ1 outer product with J2 MJ2 form the basis for direct product vector space H1 outer product with H2, which has the dimensionality 2J1 plus 2J2. Sorry, 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. Now, let us say we take JZ component, so JZ operating on J1 MJ1 outer product J2 MJ2. What will it be? So JZ is nothing but J1Z plus J2Z, right? So that will be operating on this eigenkette vector, simultaneous eigenkette vector. Now J1Z operating on the, so J1Z is for the Z component of the first particle. So that has nothing to do with the state vector of the second particle, because if that will operate on the second particle state vector, that will not give any eigenvalue, right? So that means the J1Z will be operating on J1 MJ1. So similarly, J2Z will be operating on J2 MJ2. So that is actually shown in step 2. So J1Z plus J2Z operating on the whole state, which is J1 MJ1 outer product with J2 MJ2. But in the second step, you can see J1Z operating on J1 MJ1, which is again taken outer product with J2 MJ2. So similarly, the second step, J2Z will not act on this one. So J2Z will actually act on the second state, which is J2 MJ2. So J2Z will act on J2 MJ2, which is again taken outer product with J1 MJ1. Is this part clear to everybody? What exactly being taught shown here? Let me repeat, because this is very important, what exactly we are talking. If we want to find out the Z component of the total angular momentum, so then Z component of total angular momentum will be Z component of first total angular momentum of the first particle plus Z component of the total angular momentum of the second particle. But our state vector, which is basically outer product of the state vector of the first particle with the state vector of the second particle. So that is why once we have this J1Z cap operated to find out the Z component of the total angular momentum of first particle, that will basically be acting on this J1 MJ1. And it has no role in, or it will not give any value here on this state, because this operator corresponds to the eigenkette of this particular particle. So that is why we take J1. You can imagine like you are taking inside this outer product, and then the operator will act only on the values of this one. Should I come to my notes like here? So when we operate
anything on this operator, anything on this outer product, let's say an operator, if I'm writing just for O cap, and if the operator is only affecting or is only dependent on A, so then this operator will act on this A11, A12, A21, A22 only. It will, once it operates on B, it will have no value. So that's why similar thing are being done here. So it will be J1Z operating on J1 and J1, and J2Z operating on J2 and J2. But what is this value? J1 Z operating on J1 and J1, that will be MJ1, and this will give MJ2 H cross. So the final would be MJ1 plus MJ2 H cross, and the total state vector. Clear? Is this part clear? Any doubt? Sir, actually, what exactly the eigenvalue you used to do, sir, here? Let me come back to that again. Abhi, let me explain in the क्या हो रहा है, हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है. पार्टिकल 1 का हमें क्या पता है, जे स्क्वायर पता है और जे जेड पता है, ठीक है. Because j square and jz commute with each other, so we can simultaneously determine the value of j square and jz. All right. तो j square का वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होगा, j into j plus 1 h cross square, right. और z कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, mj h cross, right. Now अगर हम दो पार्टिकल ऐसे ले रहे हैं, दो पार्टिकल ले रहे हैं मतलब साइमल्टेनियसली दोनों पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम और जेड कंपोनेंट पता होना चाहिए, नहीं तो दो पार्टिकल ऐसे एक साथ हम सिस्टम कैसे बनाएंगे. दो पार्टिकल का सिस्टम बना रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला, वो शुरू में हमने यहाँ पे लिखा था ना, दिस वन. सो अगर हम दो पार्टिकल ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टिकल का जे स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल का जे स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल का जेड कंपोनेंट ऑफ जे एंड सेकंड पार्टिकल का जेड कंपोनेंट ऑफ जे निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है. वैल्यू क्या होगा, ये h क्रॉस स्क्वायर j1 into j1 plus 1, h क्रॉस स्क्वायर j2 into j2 plus 1. सिमिलरली जेड कंपोनेंट का वैल्यू mj1 h क्रॉस, यहाँ पे mj2 h क्रॉस होगा. ऑलराइट. बट ये तो हो गया ऑपरेटर और आइगन वैल्यू के बारे में. व्हाट अबाउट द आइगन स्टेट, आइगन स्टेट क्या होगा. अच्छा, आइगन स्टेट ऐसा होना चाहिए जिसमें पार्टिकल 1 का इंफॉर्मेशन भी होगा और पार्टिकल 2 का इंफॉर्मेशन भी होगा, राइट. ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल 1 की इंफॉर्मेशन से हम पार्टिकल 2 का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते है ना. सो द आइगन स्टेट must have information of both particle 1 and particle 2. तो इसीलिए हमने आउटर प्रोडक्ट लिया है जिसमें सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स अवेलेबल हैं. बट देन यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जैसे हम जे जेड ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो टोटल आइगन स्टेट के ऊपर, ये है टोटल आइगन स्टेट. पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को मिला के जो सिस्टम बना है उसका आइगन स्टेट बना है. इज इट क्लियर. जब आप पूछ रहे थे ना आइगन स्टेट, ये ऐसा इतना बड़ा आइगन स्टेट कैसे बन गया, ये फर्स्ट वाला है फर्स्ट पार्टिकल का आइगन स्टेट, सेकंड वाला है सेकंड पार्टिकल का आइगन स्टेट. बट जब हम सिस्टम बना रहे हैं दोनों पार्टिकल को लेके तब सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो इसीलिए हमने आउटर प्रोडक्ट लिया. नाउ दिस आउटर प्रोडक्ट विल बी एन आइगन स्टेट ऑफ व्हाट, दिस फोर ऑपरेटर्स j1 स्क्वायर, j1z, j2 स्क्वायर एंड j2z, ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. I'll look Yeah. into more. Then I'll come. And once we have that, then we will get mj1 plus mj2 h cross, and then
this eigenstate again. But once we are getting, this is very important. Look at it here. Mj is equal to, so mj1 plus mj2, that will be equal to, because jz, that is the z component. So mj1 plus mj2 will be equal to mj for the total angular momentum case of the system of two particles, right? Now this mj is equal to mj1 plus mj2. This can be achieved in numerous ways. कैसे? वो दो एग्जाम्पल बताया है. For example, if the value of mj is equal to j1 plus j2 minus 1, मान लो हम बोल रहे हैं कि mj का जो वैल्यू है उसका क्या वैल्यू है, j1 plus j2 minus 1, इतना वैल्यू है. So how many ways I can achieve it? That I mean it is given two ways. One is mj1 को j1 ले रहा हूँ, mj2 को j2 minus 1 ले रहा हूँ, तो दोनों को मिलाऊंगा तो कितना होगा, j1 plus j2 minus 1, राइट. दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, mj1 को j1 minus 1 बोल रहा हूँ और mj2 को j2 बोल रहा हूँ, तो इन दोनों को भी मिलाऊंगा तो वही मिलेगा, j1 plus j2 minus 1. इज इट क्लियर? Yes, sir. कहने का मतलब यह है कि jz का वैल्यू, एक jz का वैल्यू के लिए मेरे पास मोर देन वन j1 और j2, सॉरी mj1 और mj2 का वैल्यू आ सकता है. वो यूनिक वैल्यू होगा, इसका ये नेसेसरी नहीं है. mj इज इक्वल टू mj1 प्लस mj2. तो ऐसे एक एग्जांपल देके यहाँ पे बताया है, ये देखो. लेट अस कम टू दिस एग्जांपल. ठीक है, क्या बोला है, j1 कितना है 1, j2 कितना है हाफ. ठीक है, शुरू में बोल दिया j1 इज इक्वल टू 1, j2 इज इक्वल टू हाफ. तो mj वैल्यू कितना, mj1 कितना होगा, mj1 will vary from minus j1 to j1 through 0, so it will be 1 0 minus 1, right? Is it clear? अगर j1 का वैल्यू 1 है तो mj1 का वैल्यू कितना होगा, minus j1 to j1 through 0, so minus 1 0 1, right? And here it has to be the difference के बाद में हमने जैसे बोला नहीं है, so उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए. तो इसीलिए अगर j2 हाफ है, so it should be minus half to half through 0, but here since minus half to half the difference is 1, so we will not have the value 0 here. तो j1 is equal to 1 के लिए हमारे पास mj1 वैल्यूज कितना है, 1 0 minus 1, और j2 is equal to हाफ के लिए हमारे पास कितना है, हाफ एंड माइनस हाफ. So these are the mj1 values, these are the mj2 values. Now mj, अगर हम mj वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड करेंगे. So 1 plus half, that is 3/2, 1 minus half, that will be equal to 1/2. Second one will be 0 plus half. 0 plus half is half, and 0 minus half, that will be minus half. Next one will be minus 1 plus half. So minus 1 plus half, that is 1/2. And last one will be minus half, minus 1 minus half. So that will be equal to minus 3/2. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि mj is equal to हाफ के लिए, mj is equal to हाफ यहाँ भी है, mj is equal to हाफ यहाँ भी है. तो mj is equal to हाफ कहाँ से आ रहा है, mj1 1, mj2 माइनस हाफ. इससे भी बन सकता है यार, mj1 0 और mj2 हाफ, इससे भी बन सकता है. So there are two possibilities to get the same mj value. Similarly, for mj is equal to minus half, we also have two possibilities. One is 0 half, 0 minus half, another is minus 1 plus half. ठीक है, only 3/2 और minus 3/2 के लिए हमारे पास क्या है, यूनिक वैल्यू, यूनिक mj1 mj2 values है. So that's why it is written. You can see that it is possible to obtain the value of mj is equal to half, and from two possible combinations of mj1 and mj2, which is
1 minus half and 0 half. Similarly, the value of mj is equal to minus half can come from mj1 and mj2 being 0 minus half and minus 1 half. However, the maximum value of mj 3 by 2 is possible only for mj1 mj2 is equal to 1.5. So maximum का यूनिक होगा एंड मिनिमम का भी यूनिक होगा. सो इससे क्या पता चलता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है वैल्यू उसके लिए नॉन डिजेनरेट आइगन केट्स है और अदर्स के लिए वो डिजेनरेट आइगन केट्स. डिजेनरेट मतलब मोर देन वन वैल्यूज के लिए वो सेम आइगन केट यूज हो जाएगी. ठीक है. Is it clear up to this point? Yes. Okay. So then coming back to again our total angular momentum values for particle 1 and particle 2. So J1 square JMJ will give us इतना हम आउटर प्रोडक्ट ऐसे ना लिख के अगर हम सिर्फ JMJ करके लिखेंगे तो h क्रॉस स्क्वायर J1 into J1 plus 1 h क्रॉस स्क्वायर J2 into J2 plus 1 एंड सिमिलरली J स्क्वायर का ये h क्रॉस स्क्वायर J into J plus 1 हो जाएगा. ठीक है. Is it clear up to this point? ये मैथमेटिक्स थोड़ा we are actually one step up now with the mathematics. I can sense तो थोड़ा डिफिकल्टी अगर लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोगों को सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाना है. ठीक है. I don't think it is difficult. It's the only thing is matter of time that you just need to read and know what exactly it is telling you. Okay. क्वांटम 1 में कहाँ तक पढ़ा है ये सब थोड़ा बहुत क्वांटम 1 में पढ़ाया होता तो अच्छा होता. How far they have covered in quantum 1? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. So क्वांटम 1 में कहाँ तक पढ़ा है ये सब एंगुलर मोमेंटम्स वगैरह पढ़ा है ऑलरेडी? नहीं सर 2 क्लास हुआ है. ओके. 2 क्लास हुआ है. ऑलराइट. क्योंकि ये सब क्योंकि बेसिकली यही है कि अगर एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. नहीं ना? तो नहीं तो फिर इसका मतलब नहीं रहेगा. यस सर. क्या अभी तक जो जितना तक मैथमेटिक्स मैं बोला हूँ वो समझ में आ रहा है, राइट? हाँ सर. आप स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं तो पिकअप तो हो रहा है सर कोई. Okay, so because with that knowledge you can actually progress. I mean सब कुछ बताना जरूरी नहीं है. With that knowledge you can actually progress. कि आइगन स्टेट क्या है, बेसिकली क्या है, आइगन स्टेट को पकड़ के हमको आइगन वैल्यूज निकालना है ना. दो पार्टिकल, एक पार्टिकल मतलब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का हम दो ऑब्जर्वेबल्स ले रहे हैं, एक टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर और एक जेड कंपोनेंट जे जेड. सो सिमिलरली पार्टिकल 2 का भी हम टोटल एंगुलर मोमेंटम और जे जेड दोनों ले रहे हैं. अगर हम पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को लेके हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो ओवरऑल उस सिस्टम का अगर हम जेड कंपोनेंट और जे वैल्यू निकालेंगे, जे स्क्वायर एंड जे जेड, तो वो क्या होगा. ठीक है, वही आइडिया है बेसिकली. वी नीड टू फाइंड दैट. कि मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं
तो उनके टोटल एंगुलर मोमेंटम कितने होंगे या उसका जेट कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो पता होना करने के लिए ही हमें ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का पहले एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, ठीक है, और जेट कंपोनेंट पता होना चाहिए. फिर वी नीड टू डू ऑल दिस मैथमेटिक्स टू फाइंड आउट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ऑलराइट. यस सर. Yeah, so you can see the eigenstates को हम कैसे, this will be like an infinite set of eigenstates. So J will be equal to J1 plus J2, J equal to J1 plus J2 minus 1, क्योंकि J जो MJ values है that will vary from J1 plus J2 to minus of J1 plus J2, right, or the difference जो भी होगा, so it will be J1 minus J2 in that sense. सर एक मिनट सर. आपका जो प्रीवियस क्लास के ऊपर हम जस्ट आई मेड ए फ्लो चार्ट फॉर बेनिफिट ऑफ जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. ऐसे है कि जैसे हमें लगा कि आप जो QM4 पढ़ा रहे हैं उसके लिए वी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, प्राइमरी नॉलेज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स 2. उसके बाद ही आप क्वांटम मैकेनिक्स 2 8 में आता है. तो वी नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड QM1. ये होने से थोड़ा इजी होता है, नहीं तो फिर आपको भी आप लोग रोक रहे हैं, वी बिकम इनरेस्पॉन्सिव, उस तरह का सिचुएशन हो रहा है. जैसे मेरा अगर इंटरप्रिटेशन गलत है तो करेक्ट मी, हमको ये लगा है. थैंक यू सर. Yeah, I mean, you are correct. Actually, quantum 2 as it is already, I mean, it is 2, right? It's an intermediate quantum mechanics. It's not the fundamental or the quantum 1. जैसे quantum 1 में आपको you start from scratch, right? But quantum 2 में we expect कि जो quantum 1 का knowledge है वो already दिमाग में है ना? तभी जाके हम उसके ऊपर ही डेवलप कर रहे हैं. जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लाइक दोस थिंग्स, ब्रैकेट, अलजेब्रा, सो ऑल दीस थिंग्स आर ऑलरेडी बीइंग कवर्ड इन क्वांटम 1. सो क्वांटम 1 स्टेट वेक्टर्स एंड लीनियर वेक्टर्स से सर ने स्टार्ट किया यूनिट 1 की. स्टेट वेक्टर्स एंड लीनियर वेक्टर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी भी है. या एक्चुअली क्या है कि या प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए 50 क्लासेस चाहिए एटलीस्ट. So that is more like lectures and this is more like counseling. So that's why I had discussions with other teachers as well. तो उसमें क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि it's more like teaching a child how to cycle, use the bicycle. तो उसको पहले थोड़ा बता दिए तो वो भागेगा, ठीक है. You don't need to be with the child all the time. तो शुरू में अगर स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, then you can pick up. वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही सबको होता है कि वो पहले से समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना. तो वो एक बार शुरू हो गया तो you can understand, you can build up. But of course, जैसे someone of you told that mathematical physics का थोड़ा knowledge होना चाहिए, जैसे matrix algebra, differential equation, Laplace partial differential equations, जैसे मैंने अभी बोला है कि spherical polar coordinates, ये सारे यूज होते हैं. तो बट ऐसा भी नहीं है जैसे आपने वो पढ़ लिया पूरा फिर ये पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आपको याद भी होंगे, ठीक है ना. तो दैट इज ट्रू. हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, वी आर ह्यूमन. तो उस हिसाब से क्या है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली, मैं भी कभी बार भूल जाता हूँ कि यार ये क्या चीज है. सो देन आई जस्ट गो बैक एंड चेक माय बुक, व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या था. तो उससे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी इन द माइंड, इंफॉर्मेशन विल बी फ्लोटिंग, नॉट सेटल्ड. सो आप लोगों के जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन
मैट्रिक्स अलजेब्रा, और जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन डायनामिक्स जो भी है वो थोड़ा याद में रहना है। सब कुछ सारे डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एज ए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे होता है, क्या होता है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पोजीशन ब्रैकेट क्या है, उससे क्या होता है ना। आई थिंक अगर एक बात है कि डेरिवेशन याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मुझे वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर क्या व्हाटएवर मैथमेटिक्स वी आर डूइंग, वी आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, सो अनलेस we are not able to understand the end product of the mathematics का कोई मतलब नहीं है. So we always have to relate whatever mathematical result we are getting to the physical phenomena. तो उस हिसाब से याद रखेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दी याद रहेगा. हाँ सर, पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए रेफरेंस दे रहे तो हम लोग को उतना कोई असुविधा नहीं हो रहा है. बट अगेन रिटेंशन इशू जो बताए वो तो है. Unless until we have the back-end ideas, then you cannot retain much. That is also true. Yeah, and I have checked actually all the study materials provided by IGNOU. It is well written. I mean, अगर कोई सिर्फ स्टडी मटेरियल ही पढ़ रहा है, I mean, it is almost 70-80% job is done. I mean, from broader perspective, not from exam perspective, कि understanding point of view से भी वो सब कुछ अच्छे से लिखा गया है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं. Only thing is you do not have to skip anything. You have to read everything from the material what is provided by IGNOU. So ऐसा होगा तो आपको समझ में आएगा. I don't think it will be. और जैसे किसी ने बोला कि क्वांटम 1 में 2 लेक्चर्स हुए. Of course, I mean सारे चीजें कवर करने के लिए it will take time. I can imagine in my own lectures in quantum mechanics I will take more than 50 classes to cover the whole syllabus. So I cannot simply cover it. So that's but one point is also good, that you get some starting ideas and then you read. So then आपको starting problem नहीं होगा, आप अच्छे से उसको पेस अप कर सकते हैं, है ना. मेरा सर छोटा सा रिक्वेस्ट है टू द होल रीजनल भुवनेश्वर रीजन को, फ्यूचर कोर्स जब भी आप लोग करेंगे तो ये फ्लो ऑफ पैटर्न अगर एक तरह से होता है तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स. लर्नर हम लोग जो है मोर सो जो हम लोग एडवांस लर्नर है उसको थोड़ा वो थोड़ा ये सहूलियत होगा. मैंने अगर सोचिए कि आई नीड टू हैव एटलीस्ट 4 क्लास ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स बिफोर जंपिंग इनटू क्लासिकल 1, might be after 3 class then classical 2, इस तरह का अगर फ्लो होता. Yeah, I think I do be more proactive. I guess the coordinator will take note of that. Yeah, we'll tell him. Based on your submission or some kind of feedback, then it will be good for the future learners, sir. Thank you, sir. इसके बाद या टाइम इज शॉर्ट, बट इसके बाद ब्लॉक 2 में कुछ परटर्बेशन थियरी है. उससे जस्ट आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं. जस्ट मैं एक स्टार्टिंग में बता देता हूँ क्या है वो. क्वांटम 1 में जितने सारे क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम किए जाएंगे उसमें हैमिल्टोनियन जो है वो काइंड ऑफ वेरी नाइस हैमिल्टोनियन, मतलब सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा p²/2m और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे हैं वो दोज आर आल्सो वेरी सिंपल वंस. वन डायमेंशनल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे स्टेप पोटेंशियल हो गया या बॉक्स पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल वेल हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो वेल बिहेव्ड फंक्शंस होंगे. बट रियल लाइफ इज नॉट दैट इजी, क्योंकि जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम जो पोटेंशियल होंगे वो इंटरैक्टिंग पोटेंशियल्स होंगे. इंटरैक्टिंग पोटेंशियल में कुछ चेंजेस होंगे. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि p², my screen is visible to all of you, h_(-h²/2m del square plus br. This is the simplest of the Hamiltonian potential kinetic energy plus potential energy. But what about the interaction energy? कुछ और इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो वो भी तो आएंगे. और इसके स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंटरेक्शन कितना ज्यादा या कम हो रहा है ना. मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक हैं,
शायद वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो बहुत दूर है, शायद उससे उसके इंटरेक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज 1/r³, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन, तो अगर हमको सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन पता है, -h²/2m del² + Vr का सॉल्यूशन पता है, मतलब क्या है, व्हेन आई से सॉल्यूशन पता है, इसका मतलब ये कि मुझे उसका एनर्जी आइगन वैल्यू पता है और एनर्जी आइगन स्टेट के बारे में पता है, आइगन स्टेट्स भी पता है और आइगन वैल्यूज भी पता है एनर्जी का, हैमिल्टनियन का, है ना। और उसमें अगर थोड़ा चेंजेस हो रहा है, पर्टर्बेशन हो रहा है, मतलब थोड़ा पर्टर्ब हो रहा है, स्मीयर अप हो रहा है, या ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा स्मॉल चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंज को हम एक्स्ट्रा एनर्जी की तरह, पर्टर्ब्ड एनर्जी की तरह, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं h int, तो वैसे ही लिख के फिर हम टोटल हैमिल्टनियन को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देयर आर मैथमेटिकल रेसिपीज, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल रेसिपी है, तो उससे हम W के भी अप्रोक्सीमेशन हो गया, वो सब हो गया, तो उससे क्या होगा, हम पर्टर्ब जो चेंज हुआ है हैमिल्टनियन, वो चेंज्ड हैमिल्टनियन से भी हम एनर्जी और स्टेट के बारे में पता कर सकते हैं, बट विद द गिवन कंडीशन कि जो चेंज है वो एक स्मॉल चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यूनिट 2 में टाइम रिवर्सल जो है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा। सॉरी, कम अगेन। टाइम रिवर्सल इन यूनिट 2, प्लीज सर, लिटिल बिट डिस्कस अबाउट इट। ओके, टाइम रिवर्सल। यूनिट 2 में था वो, यूनिट 1 में। अच्छा, राइट, यूनिट 2 वो सॉरी, यूनिट 2 में, ये तो यूनिट 3 है। Yeah, this one, right? Yes sir. Yeah. So time reversal मतलब क्या 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 होगा उसमें? What exactly we are expecting? Means we are going from final to initial state. Yeah, so we are moving backward in time, right? So अगर हम already if you look at this equation, अगर time forward direction में जा रहे होते तो क्या था? Time evolution कैसे हो रहा था? e to the power minus IHT by h cross, right? या I delta t by h cross, ऐसे आ रहा था ना? Yes. Yeah. तो यहाँ पे क्या होगा? ये we are basically going, your time now is kind of negative, right? एक्सपोनेंशियल का e to the power x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा? e to the power x का 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3, like that only, right? Yes, sir. Let me write it. Taylor series expansion, sir. Yeah. 1 plus x square by factorial 2 plus
x cube by factorial 3, like that, right? Agar x is very small, I can simply neglect x square, x cube terms, right? So that will be nearly equal to 1 plus x, or e to the power minus I h delta t by h cross लिया तो क्या होगा वो 1 minus I h delta t by, right? Isn't it? Yes, sir. Yeah. So when you come back over here, what exactly we are getting? This one only, right? So consider now that we apply the time reversal operator on the state at the point t equal to 0, so that the time reverse state at t equal to 0 is this one. Time reversal operator को ऑपरेट किया तो time reversal में क्या हो रहा है basically? Your p becoming minus p, right? Or your theta dag p theta will be equal to minus p. All right. Yes, sir. So transformation हुआ तो basically we time reversal, ये if you look at this diagram, psi 0 से time reversal हुआ तो psi time reversal 0 हो जाएगा, और time evolution हुआ तो time psi t या time evolution delta t होगा, right? So we are basically delta t की जगह अगर हम minus delta t use करेंगे, so we will get this. So इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, basically it is the Taylor series expansion of e to the power I minus IH delta t by h cross m. सर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है टाइम रिवर्सल? फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर ऐसे हम बोलेंगे तो बेसिकली अगर हमें किसी स्टेट के बारे में पता है, किसी सिस्टम के स्टेट के बारे में मतलब उसके पोजीशन मोमेंटम ये सब बारे में पता है, तो टाइम इवोल्यूशन मतलब आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम हम उसका पोजीशन मोमेंटम क्या होगा वो बोल सकते हैं। और उसका अगर हैमिल्टनियन हमें पता है, हैमिल्टनियन इज ऑपरेटिंग ऑन दैट, या हैमिल्टनियन मतलब क्या फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं वो कहाँ था। बेसिकली अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करूं, तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोग क्या करते हैं, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? तो अगर मुझे किसी पार्टिकल के एट अ पर्टिकुलर टाइम उसके पोजीशन पता है, तो मैं उसके फ्यूचर में उसका टाइम पोजीशन क्या होगा वो बता सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर सारे फोर्सेस सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो पार्टिकल कहाँ से आया है वो भी मैं बता सकता हूँ, उसके पास्ट के बारे में भी मैं बता सकता हूँ, है ना? सर एक कभी एक जर्नल में देखे थे, सम रिसर्चर डूइंग रिसर्च ऑन कि टाइम का भी क्या मास हो सकता है, इज देयर एनी स्कोप ऑफ मास ऑफ टाइम? ये तो एनीवे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स फॉर दैट मैं टाइम, बिकॉज in general theory of relativity, energy and time are like in the four dimension case. So with basic knowledge of my physics, I could not interpret much. I just closed the chapter anyway. Well, you need to know advanced physics, not basic, not intermediate. I mean, quantum 2 is kind of intermediate. So इसके लिए आपको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स और एडवांस रिलेटिविटी ये दोनों पता होना चाहिए, तब जाके वो, और वहाँ पे सारे जो मैथमेटिक्स होगा वो टेंसर मैथमेटिक्स ही हो, टेंसर अलजेब्रा ही हो। समझ नहीं पाए सब कुछ। नहीं सर, बेसिकली टू स्पेंड सम टाइम, दैट्स सो, बट उसको ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझाना थोड़ा मुश्किल है, नीड टू बी कन्वर्सेंट विद दोस। But sir, your QM session is fantastic, sir. Personally, I am enjoying a lot. I'm trying to. I cannot figure out everything, but I'm enjoying it, sir. Thank you, sir.
Yeah, I guess all of you with this starting kick for the course, I think all of you can start working on this PDFs or the books provided by IGNO, and just keep one thing in mind कि अगर chapter 1 या unit 1 में सब कुछ समझ में आ रहा है तो based on that we can try to understand unit 2. ऐसा बहुत कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट दिख रहा है इक्वेशंस वगैरह दिख रहा है, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग। हाँ, थोड़े कुछ कुछ जगह जैसे अभी मैंने बोला कि वो स्टेप्स डायरेक्टली लिख दिया है कि ये इसके साथ इक्वल होगा, तो वो थोड़ा आपको गेस करना पड़ेगा या इससे पूछना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग, ठीक है ना। सो फॉर दैट मैटर आई थिंक द रीजनल सेंटर विल प्रोवाइड सम हेल्प। Okay, so you can keep you can start reading on these two materials. I only have one feeling that it's not possible to cover everything in short span of 8 hours. But if you still have some questions, you may pose it in the group or something like that. With time, we can try to address those questions. Okay. Okay, Dr. Patra. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.